3, 2, 1. थक दिन दिन ना, तक दिन दिन दा। अच्छा जी, वेलकम टू द 37th एपिसोड ऑफ द किंग पेयर पॉडकास्ट। और आप सोच रहे होंगे कि हम जमीन पर क्यों हैं, तो ये अरहम एक्सप्लेन कर सकते हैं बेहतर। Trigger warning. This episode has a lot of emotional conversation, so I would suggest या तो आप ये उन लोगों के साथ ही देखें जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हैं, जैसे हम आपस में हैं, या आप अपने थेरेपिस्ट के साथ भी इस एपिसोड को देख वैसे सकते हैं। ये अच्छा आइडिया है कि आप जो 1 घंटा है थेरेपी का, उसमें से आधा घंटा इसके ऊपर लगाएं हाँ, और आप ये सोचें कि मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया, और फिर उस आधे घंटे में we'll throw in some questions that might help you dig Yes. deeper into who you are. Yeah, I think the first question we should segue into is why cricket, and As then a sport. why Pakistan cricket. So why cricket? Thoughts? यार, अहमद नकवी का सुना है तुमने? वो जो सुना हुआ है। डिफरेंट इमोशनल क्लिप्स होते हैं जिसमें वो कहता है कि क्रिकेट मेरी जान है, क्रिकेट मेरा दिल है, बिल्कुल। मुझे प्यास लग रही हो, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मुझे नहीं पता उसने ये कहा है, मैं कह रहा हूँ मुझे Tell भूख that to लगती all the है। children in Africa. Let's play some cricket. वो फुटबॉल खेलते हैं। यार, ये तो मसला है ना, इसलिए वो गुर्बत में है। यार, ये निकल जाएगा इस पॉडकास्ट एपिसोड से। गुर्बत एक इट्स नॉट अ फनी मैटर। Okay, man. Especially like if you're playing football, like so cricket is the game of the rich. Yes. ठीक है, क्योंकि आपको डंडे चाहिए, उसके लिए बल्ला चाहिए, गेंदे चाहिए, पैड्स चाहिए। यानी कि अब एक लेदर की गेंद बनाने में इतनी देर लग जाएगी और इतना पैसा लग जाएगा, वो उतनी देर में आप एक फुटबॉल से जो है वो खेल लो। आप 4 फुटबॉल की गेम्स खेल सकते हो उतनी देर में। हाँ, और वो भी है ना कि वक्त भी कम है और काम भी ज़्यादा है फुटबॉल में। इधर तो आप लगे हुए 5 दिन। तो there is absolutely no logical reason why you would choose cricket as the sport to be your favorite. Yeah. अब पाकिस्तान क्रिकेट क्यों? अब क्रिकेट के लिए वजह नहीं है तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो बिल्कुल पाकिस्तान तो हम तो खैर कॉलोनाइज्ड है, हम तो out of like our colonial past and that trauma is one of the reasons we're sticking to cricket, and also it's a way to give it back to the white man, you know. We haven't done that, to be honest, but अगर आपको याद हो 1992 का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था एक, we'll need to go back like 40 odd years. इंग्लैंड को हमने शिकस्त दी उन्हीं के रिवायती हरीफ के ग्राउंड में, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में। पता नहीं अभी इस रिजल्ट के अंदर कोई तब्दीली आई है या नहीं। वो भी गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है अभी। So far, yeah, we'll find out. Who won the 92 इंग्लैंड जीत जाए अभी थोड़ी देर बाद। But I think quite realistically, if you think about it, Pakistan cricket of late, it's been a sea of heartbreak, and I don't understand why anyone would want to follow it. हाँ, यानी कि हमने आज का जो एपिसोड है वो heartbreaks के नाम किया, और उसकी यही वजह है कि हम सोच रहे थे कि किस बारे में बात करें, और फिर हमने जो भी टूर्नामेंट उठाया जिसमें पाकिस्तान खेला है हालिया दौर में, या जो भी सीरीज़ उठाई है उसमें तकलीफ़ का सामना करना। बट अब देखो, मेरा ख्याल है कि 3 रिजल्ट्स होते हैं क्रिकेट की गेम में यूजुअली। एक होती है कि आप जीत जाओगे, विक्ट्री, the other is a loss, and the third is a heartbreak. There's a fourth one you're missing. Draw. Moral victory. हाँ, moral victory भी कह सकते हो, और super over, Bazid Khan would argue, is the fifth type. It's the fifth type. So whether the super over happens or not is irrelevant. It's whether it was brought up by Bazid Khan in commentary or not is, or on Bazid Twitter. Khan पे भी एक explainer बनाएंगे मेरा ख्याल है। I think that requires 10 episodes. हाँ, a series. तो जो तकलीफ़ है वो तो जाहिर सी बात है बरकरार है। पाकिस्तान की अगर हम लॉसेस रिकाउंट करें, और हार्ट ब्रेक जो है वो एक इस तरह का लॉस है कि आप जीतते जीतते हार जाओ। यू नो, इट्स नॉट द काइंड वेयर यू आर लूजिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि दैट्स जस्ट अ लॉस, यू नो, उस पर आपको गालियाँ पड़ती हैं, मूव ऑन। लेकिन हार्ट ब्रेक होता है कि जब आप गाली भी नहीं दे सकते अपनी टीम को, क्योंकि आप कहते हो यार इन्होंने इतना अच्छा खेला है, और फिर भी हरामजादे हार गए। बिल्कुल, you know. and there's a 90% chance they were beaten by an Australian team. On the other, like there is no other team stage है कोई। Absolutely, every other team would want to convincingly beat you, but Australia apparently has a habit of just doing it when edging and doing it at a point where you know you think you have a chance and you think you've overcome
the might and the glory of the Aussies, but they will unless you're West Indies आप नहीं कर सकते वो. apparently. तो हम अगर शुरू करें 2023 के एंड से या लैटर हाफ से, तो एशिया कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया सीरीज, न्यूजीलैंड सीरीज, और अब अंडर 19 वर्ल्ड कप, हम कुछ ऐसे तर्ज में हारे हैं जिसमें गुस्सा कम था और तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, because they were all very close, especially as we moved along the year, और we were very close to winning almost all of the matches that I can recount. And we were favorites for all the tournaments that happened. Yes. From the Asia Cup. Asia Cup, everybody thought it's going to be Pakistan, India. India was doing horrible up till that point in every tournament, in every series even. And then, their team, bas ek tarah se, they got together. Ended up winning the Asia Cup, went straight into the World Cup, won every single game. Except the one that mattered the most. And now nobody even remembers them. And most Australians don't even remember that they won the World Cup. So you know how they say it's the people that love you that hurt you the most. खूबसूरत बात है ये. और यही चीज पाकिस्तान इंडिया में आप देखेंगे क्रिकेट के. Yes, he said that too. उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उसने कहा कि the people you love the most hurt you the most. And that's exactly what happens in India and Pakistan, where the team that you love so much, the team that you would pay millions to go and watch a match for, the games which you would artificially make the prices of the tickets go so high that nobody can afford them, but yet the stadiums are full. The one for which both countries will come together and co-host shows with each other, co-podcast shows as we've done as well, and co-author blogs. They will come and do multiple other acts to show unity and love with one another. They will marry one another. When that event itself becomes, I actually don't know where this is going. It was good to listen to though. I'm sure it feels very nice on the mic. जैसे कि आप देख सकते हैं हमने नया माइक लिया है. अगर आप अभी तक जाग रहे हैं तो फिर आप देख सकते हैं. But when there's bad cricket played from either side against, especially a white country, yes, it feels almost like the nation has collectively lost. So even when India lost, there was a lot of excitement from the Pakistani side. Ke, ye dekho, bade shoke ho rahe the, and so on and so forth. But I think at the same time, there was a part of me which said, they were also our brothers and our sisters who lost in war to the white man, and that did disappoint me. अच्छा, तो तुम चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया हार जाए? Yes, I think the collective subconscious of the Pakistan in Indian countries, it kind of comes together at when it comes to kicking the white man out. Kicking the white man. लेकिन हम भी तो अलग हो गए थे ना उस process में. बिल्कुल, but I think my heart and at some point our genetics and our consciouses are connected. Yes. And that's what I think is very important in all these losses, because can exes be friends? Since what? On a roll. This is let me. First of all, thank you for the question. I think exes cannot be friends, especially immediately after a relationship ends. Now let me get into this. So let's take an example of Pakistan and India. Exes, kind of. For sure. Right after the partition, if they said, let's just be friends, can't work out. Why? Kyunki porous borders. Let me please let me finish. So first they are one, and once they become two, it is almost like the pulling of a cloth and a ripping of a cloth. जहाँ उसके वो जो क्या कहते हैं fibers अभी तक उस trauma की वजह से they're unraveled. And what that causes is कि आप instantly उस चीज को वापस नहीं डाल सकते. You need that unraveled fiber to heal. Because if you get into friendship again,
what happens? You cannot fulfill the merits of a good friendship. That is. So, what about, can exes be enemies? Like we did, the few wars that we fought. In fact, we were very commended by the white man for our services of partition. Yes. तो हाँ, I mean, इंडिया पाकिस्तान, मुझे अच्छा लगा कि ऑस्ट्रेलिया जीत गई है फाइनल. Of course, it was. I think they were the underdogs मुझे in the लगता है कि तुम situation. किसी और के फाइबर्स के बारे में सोच रहे हो जब तुम इंडिया के बारे में सोचते हो. कोई शख्सियत से, मुल्क से ज्यादा तुम्हें जो है ना किसी शख्सियत के ऊपर हो सकता है, बिल्कुल हो मोहब्बत है. सकता है ऐसे. हाँ. बिल्कुल हो सकता है ऐसे. हाँ. बट आई थिंक वीजा बॉम्बे से मिलता है वैसे. ये पॉडकास्ट है क्रिकेट के बारे में. क्रिकेट के बारे में ही बात हो रही है. क्रिकेट के बारे में बिल्कुल. हम कसौटी खेलेंगे किसी दिन इसके ऊपर. 20 क्वेश्चंस, गेस द पर्सनालिटी. Yes, that would be nice. कमेंट में किसी ने कर ली तो वो जीत जाएगा. I don't know क्या जीतेगा, लेकिन वो जीत जाएगा. So yeah, I think whenever either country faces loss, it's extremely painful for the, I mean, for the other nation as well, but like at a more visceral level, it's for your own self, for the nation itself. That's beautiful. I mean, there's so many losses we haven't overcome. I mean, हम तो 23 की बात, 21 वाले सेमीफाइनल से बात करें जहाँ ऑजीज मैथ्यू वेड ने हमें मतलब क्या ही किया. I mean, that was our tournament, you know. It felt like that. And then the next year, I think when we got to the final against England, I knew England would win. They were too good in that tournament. But the 21 one was very sad. And then, you know, it's just been so good up until 23, where I feel like everything fell apart. And a major part of that is what's been happening in PCB, and that is what ultimately leads me to the question of why Pakistan cricket. That also, देखो, PCB chairman का सवाल also leads to a deeper question of के does your relationship with your parents reflect in your relationship with others? Because does Pakistan cricket team's relationship with their chairman affect and show in their interactions with other teams? देखो, constant appeasement चाहते हैं वो, Christmas gifts लेके जाते हैं. बिल्कुल lollipops, they like to get beaten. Yes. Very like a fatherly trope. Dare I say, not that I'm an expert anymore on this or can claim to be one. But कितने आ चुके हैं? 150-200 तो हो गए होंगे PCB chairman. Yeah, I think मुझे पता नहीं उस शख्स का नाम, लेकिन वो एक बंदा जो है PCB में 3 दिन के लिए रहा था. एक तो बीच में 3 दिन के लिए भी रहा था. बिल्कुल, लेकिन एक शख्स है जो हर PCB चेयरमैन को ब्रीफिंग देता है, and he's been giving these for I feel like forever. मुझे उसका नाम भूल गया, लेकिन वो हर ब्रीफिंग, जब भी कोई नया चेयरमैन आता है वो उसको ब्रीफिंग दे रहा होता है. एस्टैब्लिशमेंट है PCB. He's the establishment. I don't know, maybe he is so significant or at the same time so insignificant that nobody wants to really do anything with his position. So my guess is, yeah, that's a great guess. Silence. My guess is that there's absolutely a very strong relation between the PCB chairman and the cricket team's performance, because ultimately it's the chairman making a lot of decisions, even when the chairman can't make decisions, such as we saw in the change of the team management when Zaka Ashraf couldn't technically do it, so he hired everyone as a consultant. Including Hafiz. और कुछ अंदर की खबरें तो ये हैं हमारे पास कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो नाखुश हैं PCB से. अभी भी जो काम कर रहे हैं PCB में वो भी काफ़ी नाखुश हैं. और उधर पास्ट में भी जो लोगों ने काम किए वो भी काफ़ी नाखुश थे. ना उनको पैसे मिले थे, ना उनको रिकग्निशन मिली थी. निकरों के ऊपर उनको निकाल देते थे आप PCB से कि उन्होंने निकर पहनी हुई है जी. तो अब तो बहुत बेहतर हालात है. मेरा ख्याल है कि वो फॉर श्योर जहाँ भी ज़्यादा पैसा मिले आपको और कोई फ्रेंचाइज आपका अच्छा ख्याल रखे, आपको चले जाना चाहिए. या कोई क्रिकेट बोर्ड किसी और मुल्क का, क्रिकेट बोर्ड किसी और मुल्क का ख्याल आपका ज़्यादा रखे, आपकी बीवी आपका ख्याल ज़्यादा रखे या शौहर आपका ज़्यादा उसके पास चले जाना चाहिए. मेरा ख्याल है कि इतना हार्ट ब्रेक काम पर ही हो जाता होगा इन लोगों को. ठीक है,
कि जो trauma है, like people talk about soldiers and how they should have therapists, and cricketers and how they should have therapists, but I genuinely think that media managers in the PCB, managers, all of them, should have Plural. therapists. Yeah, क्योंकि वो बेचारे जिस अजियत से गुजरते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो उनसे डिमांड्स होती हैं कि वो पब्लिक इमेज भी ठीक रखें क्रिकेटर्स की, पीसीबी की भी चुके हैं थोड़ी सी, उनके चेयरमैन की भी चुके हैं, अच्छा चेयर वुमेन भी नहीं होता, ये भी एक मसला है. It's just chairman. They can't even perceive. वो language, it's violence through language. Wittgenstein ने कहा था ना कि the limits of your language are the limits of your world. No, he didn't say that. It was something else. The limits of your imagination. I think that was not language. The world. No. Yeah, limits of your language are the limits of your. Anyway, cricket board. And speaking of cricket board, we've seen the son of a Ashraf. But I'm talking about the other one who's doing the PSL anthem. Oh, the son of a Zafar की बात हो रही थी. बीच में हमारे कैमरा बंद हो गया और हम तकरीबन 10 मिनट बोलते रहे उसके बाद. हाँ, काफ़ी रिविटिंग कॉन्वर्सेशन है जो आप कभी नहीं सुन सकेंगे, लेकिन हार्टब्रेक के सन ऑफ जफर को PSL 9 का सन ऑफ PSL मैनेजमेंट ऑफिसर की वजह से PSL का एंथम मिल गया एक और. आयमा बेग हैज़ एंडोर्स्ड हिम एज वेल बिकॉज शी इज सिंगिंग विद हिम व्हिच इज़ आल्सो सैड, एंड द ईयर जस्ट कीप्स ऑन गिविंग. पीसीबी के मसले हैं वो हम एक्चुअली एक और एपिसोड में कर सकते हैं डिस्कस. काफ़ी इंटरेस्टिंग पीसीबी चेयरमैन के ऊपर भी कॉन्वर्सेशन हुई थी. Just summarizing TLDR दे रहे हैं क्योंकि हमने खलवत में वो बात की थी और हम इतने रिविट हो गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि बंद हो गया. खैर, एनी लास्ट वर्ड्स ऑन द हार्टब्रेक बिफोर वी लॉग ऑफ? So the last 365 days and even longer has been full of heartbreak. For the year ahead now, I think that's the conversation, or at least the point I want to talk about. What am I expecting? We have a T20 World Cup coming up, which we're not going to win, which we might get to the semis of. I'm looking forward to nothing. That is my relation. We're both looking forward to nothing. I'm just a test cricket follower now, and that's about it. Yes. What do you follow, and how are you coping up with your heartbreaks this year? Tell us in the comments. Lovely.